सुना होगा ना आपने कि when people hit a milestone like 100K, तो लोग बोलते हैं कि it's not feeling like anything. एंड मैं देखती हूँ और मुझे लगता है कि यार क्या मतलब सबका एक ही डायलॉग है. कांट दे कम विद एनीथिंग एल्स? मतलब you know I have hit 100K today but it doesn't feel like anything. What do you mean? 100K फॉलोअर्स हुए तुम्हारे भाई, हाउ डू यू फील लाइक एनीथिंग? मतलब what? But when I look back at my achievements, तो बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल बाइंग दिस मैकबुक वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ जब मैंने ये किया. बिकॉज ये तो मेरे विजन बोर्ड में नहीं था भाई. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक मैकबुक लेना है. मुझे सिर्फ आईफोन की उम्मीद थी, आईफोन मैंने ले लिया था, तो मेरे लिए नहीं था इतना इम्पोर्टेंट. बट जब वो मुझे मिला तो आई वॉज हैप्पी. बट अगेन द सेम रिएक्शन, मतलब माई लाइफ डिड नॉट कम्प्लीटली चेंज. हाँ, नॉर्मल डे था, मैं नॉर्मल थी, मेरे पास ये बस एक एड ऑन हो गया लाइफ में. इन द सेम वे आई मीन मेरे लिए भी 100K फॉलोअर्स बहुत मैटर करते हैं और अभी मेरे पास नहीं है. यूट्यूब पे तो बहुत ही कम है. इंस्टाग्राम पे आई हैव सम decent follower count, but 100K is my goal. Now I don't know how it feels like to reach to 100K, but you know all I want to say from this is कि तुम्हें लगता है कि किसी के पास कोई एक चीज़ है, that's why they are so lucky, that's why they have everything that they want in their life. You don't know what they want in their life. You only know what you want in your life. Because तुम्हें कुछ चाहिए and उनके पास वो है does not mean that they are happy. It only means that they have what you want. It's simple. So basically तुम्हें तुम्हारी लाइफ जो है ना वो अभी फिगर आउट नहीं हो सकती है. एंड दैट्स द रियलिटी. आई वांट टू कीप इट as clear, simple, and as casual as possible, because I don't know man, मैं भी बना सकती हूँ वीडियोस. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. बट ये वीडियोस मैं हर बार देखती हूँ. मतलब एवरीवेयर आई गो दीज आर द सेम वीडियोस दैट आई वॉच एंड आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ देम. आई वॉन्ट टू सी समथिंग जो रियल है. आई डोंट नो मैन, जो अनरियलिज्म है सोशल मीडिया पे, दैट हैज़ इम्पैक्टेड मी सो मच इन द पास्ट 2 years, 2.5 years of my life. बिकॉज मैं किसी का कॉन्टेंट देखती हूँ एंड आई रियली फील बैड. आई फील कि यार अब मैं क्या करूँ. दिस फीलिंग इज उन्होंने ये अचीव कर लिया, अब मैं कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँ. इट्स नॉट वाओ दिस इज अचीवेबल. जो मैं सोच रही हूँ इज अचीवेबल. It's not that any time, like ever. It's always this scarcity mindset that I have. It's never the abundance mindset ki bhai, wow, this is possible, I can also do it now. Comparison, like मूविंग आउट. बहुत लोगों ने मूव आउट करा है फॉर देयर कॉलेज, फॉर देयर स्कूल, फॉर देयर जॉब, खुद से, अपने आप से. मुझे 10th स्टैंडर्ड से मूव आउट करना है, नहीं हो पा रहा है. आई इट्स बीन 6 to 7 years और मोर जब से मुझे मूव आउट करना है, बट वो नहीं हो पा रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन?
it means that I will watch the person who is moving out and living their life, and I'll feel कि यार wow they have achieved it. But I don't know, for example वो उनकी मजबूरी भी हो सकती है that they had no choice, मुझे willingly करना है. So this loop is just never ending, and what's been helping me is that cut off social media, try to avoid using it as much as possible, and सिस्टम बनाओ खुद के काम के लिए. जैसे मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मेरी लाइफ में तो काम करना ही इतना मुश्किल है बिकॉज आई डोंट हैव लाइक अ वर्क दैट आई हैव टू कंप्लीट. मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग एट अ जॉब, जैसे अगर कोई टेक जॉब है, सो यू हैव अ टास्क, यू कंप्लीट इट, इट्स ऑन द लैपटॉप, यू नो इट. कंटेंट के अंदर इट्स डिफरेंट. कंटेंट में यू हैव टू थिंक व्हाट कंटेंट यू वांट टू क्रिएट. For that you have to go to Instagram or other platforms for inspiration. You have to figure out what kind of creator are you. You have to, and I don't know, like you might also be a content creator because abhi bahut low content creators हैं in different fields. So we all know that how confusing it is at times, and me being the eldest child and someone who was an all rounder, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. बट अगर मुझे बोला जाए कि मुझे क्या करना है, तो अगर मुझे खुद से करना है, then it's a disaster for me. तो I have spent my 2.5 years after quitting my job into figuring out कि मुझे एक्चुअल में कंटेंट कैसा बनाना है, मुझे खुद क्या पसंद है. नाउ आई एम एट अ स्टेज कि जब मुझे पता है, now I'm at a stage where I have clarity about the business I want to create, the content I want to create, the goals I have. तो मुझे क्लैरिटी लाने में ही 2-2.5 साल लग गए. And still I at that time also I was figuring out, sorry, I was comparing with creators कि यार इसने तो ये अचीव कर लिया, इसने तो वो अचीव कर लिया, because they started earlier, they started with a better clarity than me. Because if I see my sister, she's younger than me, but she is achieving more than me today, because उसके लिए there's no confusion, she is doing what she always wanted to do. मतलब पहले she could not do because उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ exist करता है in content only. But now she is doing it because that's all she wanted to do. That's like there's no other way she would have lived her life. तो उसको ये पता था, एंड उसको ये चांस मिला तो उसने वो ले लिया, एंड नाउ शी इज डूइंग व्हाट शी loves to do. But for me, on the other hand, I didn't know what I want to do. I was good at everything, but I didn't know what actually made me happy and what is that one thing जो मुझे throughout the life करनी है. So it is going to take me more time to figure out, to be good at it, learn the skill, to actually start earning good money from it, and to make a career out of it. Like it's that simple. तो तुम्हारा कोई भी गोल हो सकता है. तुम्हें मूव आउट करना है, तुम्हें ट्रैवल करना है, तुम्हें कोई एक फाइनेंशियल फिगर अचीव करना है, तुम्हें फॉलोअर्स अचीव करना है, तुम्हें लव ऑफ द लाइफ अचीव करना है, इन टर्म्स ऑफ यू वांट द लव रोमांटिक पार्टनर इन योर लाइफ. कोई भी गोल हो सकता है यार. सब लोग अपने हिसाब से अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं, एंड आई डोंट नो मैन, I think I'm treating this as a digital window where I am talking about my life through my office and this little casual conversation. And तुम जो देख रहे हो is on the other end of this window watching me, and you might also create this little casual digital window for me to watch your life and to feel that it's normal to not know what you want out of your life, right? Because my mom was really good at studies, and uh, बहुत अच्छी थी. Like she was
a multi talented just like me, but वो अभी ट्राई आउट कर रही है कंटेंट, वो अभी ट्राई आउट कर रही है चीज़ें, शी इज स्टिल लर्निंग। वो उन्होंने अभी कुछ डिप्लोमा कोर्स में ज्वाइन किया एट द एज ऑफ 48। आई मीन, if she can, who am I to compare myself with people who have achieved the things that I want to achieve? मतलब there is no timeline in your life. तुम तुमने अगर आज सोचा कि तुम्हें ये चीज़ अगले 2 साल में अचीव करनी है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। यू डोंट नीड टू सी कि अच्छा तुमसे 5 साल छोटे बच्चे ने भी ये चीज़ अचीव कर ली है, सो यू कांट। नो, प्लीज, बिकॉज दैट्स द direct way to kill your happiness, and it's a disaster. I don't know, I'm not here with strategies जो तुम्हें दिखती है usual YouTube videos में. I wanted to keep this conversation very raw, real, and something कि जो तुम्हें कोई दोस्त आके बताएगा, तुम्हें कोई दोस्त ये तो नहीं बताएगा ना कि hi guys, so here's how you can achieve your goal in the next 1 year. I don't think that's how you converse with your friends. I want to create a space on the internet जहाँ पे I am that person जो कि बहुत real है, you know. And I also, मतलब मेरा first instinct जब मैं शूट करने निकलती हूँ, मुझे यही निकलता है कि you know, hi, ये मैंने बहुत सेटअप चेंज किया बिफोर शूटिंग दिस वीडियो, बट आई एम लाइक इट्स नॉट फीलिंग मी, इट्स नॉट हिटिंग। सो दिस इज व्हाट इज रियल। तो यार बाहर आओ अपने इंटरनेट के ऑनलाइन वर्ल्ड से एंड ट्राई टू फील द लाइफ इन रियलिटी, एंड इट्स मैजिकल। Magic lies when you try to find it, when you try to actually experience your entire day and not just try to pass it by because तुम्हें you hate your job, or you you're not in a good mood or whatever. I'm just trying to say कि यार, why do we postpone our happiness for tomorrow? Why is it a thing to be enjoyed tomorrow, you know? अगर आज तुम्हारे पास थोड़ा कम पैसा है तो आज तुम थोड़े छोटे कैफे में जाओ, पर एंजॉय करो। कल तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो तुम बड़ी होटल में जाना, बड़े कैफे में जाना, एंड वहाँ पे एंजॉय करना। I know that it sounds very simple, but it's not, because even I'm struggling from a lot of things, and at times it feels very hard and unachievable and such a huge goal. But we have been to the moon, we have been to different planets, मतलब हमने बहुत चीज़ें अचीव करी है एज ह्यूमन काइंड। सो इफ़ यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इफ़ यू आर डिल्यूजनल इनफ टू बिलीव इन योर गोल्स, जो शायद किसी ने अचीव भी नहीं किए होंगे, बट इट्स योर गोल, तो यू विल अचीव इट। आई थिंक यू शुड हैव अ टाइम लाइन, शुड गिव योरसेल्फ अ टाइम, बिकॉज मैं पहले क्या कर रही थी कि आई यूज टू गिव माई सेल्फ सम गोल, एंड मेरा था कि मुझे ये अभी अभी करना है, अभी के अभी करना है। और वैसे मेरे पास बहुत सारे गोल होते थे जो मुझे अभी के अभी करने थे, goals in terms of tasks, but it's not very realistic to do everything right now. So be realistic, make your own timeline, try to think realistically कि अगर तुम्हें ये अचीव करना है तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी पड़ेगी, तुम वो चीज़ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या लोग लगेंगे, what money will you require, investment and all that, and then it will be very easy for you to think about, you know, that you are going to achieve that goal, because now you have the steps, you just have to do it now. I don't know, man, what else do you want to talk about?
because one more thing that I saw and I realized, even with me, most of the times with me, कि मैं जब भी किसी का देखती हूँ ऑनलाइन वट एवर दे हैव अचीव्ड, कोई भी हो सकता है वो, मतलब मैं उनको जानती हूँ बट नाउ आई डोंट सी दैट कंटेंट, एंड देन अचानक से उन्होंने कुछ अचीव किया एंड देन आई सी इट एंड आई एम लाइक wow, they have achieved it, wow, so cool, so cool, and then I'm again, I start to see their content पहले से कि अच्छा what have they been doing, and ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, एंड आई फील कि इससे मुझे पता लगेगा कि कैसे करते हैं, but it doesn't help like that. This is just me trying to compare even more with them and just feel that that may achieve, मतलब I don't know, man, I don't know about the outcomes, but all I have learned is to compare them with the kind of hard work they put into. वो रात को जग के भी एडिट करते हैं अपने वीडियोस, वो घूम के भी दे मेक श्योर टू पोस्ट ऑन टाइम, दे हैव अ सिस्टम, दे हैव अ entire management to make sure that their postings are not delayed. And mera to on the other hand is very different. I'm trying to now make those changes, but आई रियलाइज्ड कि मैं कंपेयर करती हूँ फ्रॉम द रिजल्ट्स, मैं ये नहीं देखती कि उसके पीछे उन्होंने कितना काम किया है. there's a creator who is a full time, you know, who has a full time job and who is also a content creator, तो she is putting less and I'm like, oh ये तो कम रखती है तो मैं भी कम रखूंगी, but I am a full time content creator. तो मतलब एंड देन मैं कोई और को देखती हूँ एंड देन आई फील लाइक ओके आई ऑल्सो डू इट दिस वे. I'm not choosing for myself. I'm just seeing what others are doing, and I'm just thinking that this is the best thing that I can also do. You, so I just want, yeah, use your brains. Don't make something that you know exists a rule. अगर तुमने देखा कि कुछ हो रहा है, so don't make it a rule that you also have to do it like that. You have your own will, power to choose and decide for your own self, and I have to constantly remind myself this, because जब तक मुझे कोई और एक person वो करता नहीं दिखता, I can't imagine myself doing it, or I can't imagine that to be a good idea, which is the worst thing for any person. Because अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ करनी है which is unique and not ordinary, तो तुम्हें तुम्हारे delusional ideas पे believe करना पड़ेगा. You will have to believe in your skills, your knowledge, and your idea. So probably I would like to end this on this note कि यार just try to think it from this perspective. सब हटा के देखो. तुम जब scroll कर रहे हो तो तुम्हारे जो दिमाग में जो भी whatever thoughts आएंगे वो सब उसके रिलेटेड होंगे, बट जस्ट ट्राई टू पुट इट असाइड, इंट्रोस्पेक्ट करो एंड देन ट्राई टू थिंक कि इज इट दैट बैड, इज इट दैट हार्ड, इज इट दैट अनअचीवेबल. नो, it's not, it's all in my head. So ask questions, break the rules, be delusional, and let's see each other when we actually achieve everything we want to achieve. Because अगर तुमने सब कुछ आज अचीव कर लिया तो तुम कल क्या काम करोगे, तुम्हारे सारे गोल्स तो खत्म हो गए फिर आज. is also what I saw somewhere. I was like yeah, मुझे है कि मैं सब कुछ अभी 22 years में अचीव कर लूँ तो मैं बाकी की ज़िंदगी क्या करूँगी. I mean yeah, I would like to, but no, it's not good for my health and for my mental health. Okay, that's it. I hope
कि मैंने कुछ तो अच्छी ढंग की बात करी होगी इतने कॉन्वर्जेशन में, एंड इट्स बीन 20 minutes, सो आई होप दिस हैज़ बीन गुड 20 minutes spent.